हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। इंडियन ट्रेडिशंस फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। इंडिया, जहाँ पे हम काफ़ी बार ऐसी बातें करते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पूरा वर्ल्ड जो है वो फॉलो कर रहा है। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंडिया को सस्टेन, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प कर सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो वही सब्जेक्ट पे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्पीकर्स इन दिस पर्टिकुलर रूम एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सच ट्रेडिशंस for next 1 hour, and I am happy and I welcome Prachi Patil. She is going to moderate this entire panel. So let me briefly introduce Prachi. Prachi is the founder of SUZU AGRO and building a multi-brand business in food sector. आज Pakao presents a convenience store of quick food which is all natural. Self-motivated individual with high level of enthusiasm and willingness to learn and incorporate instructions into daily tasks and assignments. Highly organized with critical attention to details, and Prachi is competent and diligent individual engineer. Thank you so much, Prachi, and it's over to you now, Prachi. Thank you, Dr. Pravin, for this wonderful introduction. And I welcome you all. We have very wonderful speakers here with us today. We have Prachi Patil, who is from Hunar in India. We have Binjan Sheth, who is from Thinkgreen Envirotech Pvt Ltd. We have Ojas Trivedi, who is from Ojas Trivedi Design Studio. So I would like to get, like a brief introduction from each of you, what you do, what is your venture about. Can you tell us in a brief? Binjan, starting with you. Yeah, hello all. I'm Binjan Sheth from Thinkgreen Envirotech Pvt Ltd. Ours is an environmental engineering firm, 17 years of experience, and what we specialize is wastewater treatment. We manufacture, design, supply FRP sewage treatment plant. It's a package treatment plant which is highly cost effective, portable, durable, and can be installed underground and over the ground. Our main idea is that, treating wastewater is affordable. We are here to help people who are environmentally conscious to treat that wastewater and reduce, reuse, and recycle water into gardening purpose, irrigation, urinals, and all that. So as you all know, groundwater is going very down, so it is the need of the hour, and it is time to wake up. That is what I would. Wonderful, Binjan, wonderful. And you're based out of? I'm based in Ahmedabad. We are Catering Pan India. Wonderful, wonderful. Thank you, Binjan. Pragya, would you like to go next? Yeah, hi Prachi, thank you. And namaste everyone. I'm Pragya, and by profession I'm an architect. And I've done my master's in acoustics, that is also a study of human settlements. And I've also done an AGBC accredited professional course also. And that I'm an accredited professional of that. So in my working as an architect for the last almost 10 years, we have been working in the theme of doing to sustainable development. And like every architect, everyone has a dream that his or her project should be in some form of sustainable development. And whatever products they are using, that should be sustainable. But after my kids, I have to take break from architecture. But when I was staying at home, I have seen that it's not just the architecture that depends on the whole sustainability of our planet, because that is a small role, that being an architect and building a sustainable buildings, it is only small part of it, of all of sustainable development. So I had come to an idea, what about the fabrics that we are using daily? The fabrics that we are using, it is the most important thing, that it has been coming from the prehistoric times, that everyone is using that daily, and it's in the mass production and everything. But what have we ever heard about the sustainable fabrics in India?
I have never heard before, before coming to this Hunar in India. So that was the idea, and that was the main motto of developing this Hunar in India, where we are promoting the sustainable fabrics and making people aware that India, which is always rich in this all sustainable fabrics, and it's working and everything. So we are trying to make people aware and promote the Indian fabrics with its sustainable working and sustainable processing of making the fabrics. So this is a venture that is a newly start. We have newly started. It's just 3 years, and we are moving ahead with the same theme. And right now we are based in Greater Noida, and we are covering all over India also, and mostly in our society and nearby our Greater Noida, we have tried to tell people the importance of sustainable fabrics. Wonderful, wonderful, Pragya. Welcome to the panel. Thank you. And Ojis. Thank you, Prachi, and good afternoon to every participant on this panel. So, I am an architect. We predominantly work in interior design as well as architecture projects. We are based out of Ahmedabad, but we work mostly in all parts of Gujarat, and if need be, we can also work pan-India. So we are having 20 years of experience. We are from SET University, Ahmedabad. And after graduation, I was fortunate to outside. Mahesh, can you please mute yourself? Yeah. Okay. Yeah, now Sorry. okay. So I worked in UK for some time, where I was exposed to a lot of green building initiatives taken up in the countries of Europe and all, where I travel extensively. And I came with that study. And even while I was in Ahmedabad and working now in Ahmedabad, green building initiative have been integral part of all my projects. We start with Vaastu-compliant space planning. It starts with the design part. And what we do as a one line has a lot of impact, whether it is minimalism or whether it is green building, everything. So we are very conscious about it. So we design award-winning spaces in interior as well as architecture. Actually, we don't see a thin line between the two because it's like one design creative field. And we have been associated with relatively larger scale of projects. The image that you see in my background is a heritage-based office in Catering in Ahmedabad. And lot of projects starting from healthcare, means hospitals of big scales up to 350 beds we have been doing currently on our own brand, Ojis Design Studio, and lot of office interiors and clinics, dental clinics and all that we have been doing other than residential architecture as well as bungalow architecture. Understood. Thank you so much for having me on the panel. Thank you. Thank you, Ojis. Thank you. I see we also have Mahesh here joining today. Welcome, Mahesh. Hi. Thank you very much. I am sorry because I struck somewhere, and so No problem. Yeah. No problem. So Mahesh, yeah. आप अपने बारे में थोड़ा introduction देना चाहेंगे? What do you do? What is your company? Basically, I have no company, but I am running one voluntary organization called Paryavaran Mitra, and which is working on environmental issues and climate change issue, basically. Yeah, and we are working on the environmental impact assessment and climate change issue and all. So we are not basically company like that. And I'm basically an environmental engineer, but I can say I'm more or less like social worker or social engineer. That's it. Thank you. Okay. Thank you, Mahesh. Thank you. So as you all know, our today's topic is Indian traditions for global sustainability. So I would like to understand what is sustainability that means to you? What is the definition of sustainability for all of you and in your businesses? So for example, if you have, if somebody wants to share the thoughts, you can raise the hands also, or you can just start speaking so that we can give a chance to each and every one. And from the audience, if you have any particular questions to our speakers today regarding the topic or regarding their businesses, you can post it and we can take it after the session also. So yeah, what is the sustainability? What does it mean? Kya definition hai aapke liye? Yes, Ojis. Are you talking to me? I mean, asking to me? No, I'm speaking to everyone actually. Okay, yes. okay. So if you would like to go ahead, you can start. Ojis, yes, Ojis.
Yeah, so because sustainable and greens and all, these are all synonyms of the same term. So as I told in the beginning, when we design, we are very conscious about our design. So we, right from the design, take care of sustainable design initiatives, which actually evolves around the Vastu compliant space planning that we do. So all 5 elements, everyone knows that earth, air, water, space, and fire. We balance them and we make sure that we give a comfort situation to all the occupants. Thereby, they are healthy, more productive when they are in the space which are designed by us. They have ample of natural light available wherever there is a need. And post COVID or during COVID, there has been a lot of ventilation strategies and air quality concerns. So that also we take care. And we work on 3 R's. So reduce, recycle, and reuse. So we try to make sure that if there is a site which comes to us which had another use before, we try to recycle maximum components of it. So that is a sustainability in my field as far as I know. Exactly. That's a very wonderful point, the recyclability, and that you explained beautifully. That. Thank you, Thank you. Ajay. Yes, Binjan. So you are working more of with institutions and the companies. So how you define this sustainability now? So, as I told you, ours is an environmental engineering company. So pollution, we deal with pollution treatment. We deal with air, water, wastewater, solid waste, everything. So when we say sustainability, I think there are 3 pillars of sustainability. One is that you have to be environmentally conscious, because without environment, we do not exist. If we, our economy is not working, if only environment and no economy, then also it is not working. And if environment, economy are there, and if socially conscious we are not, then it is not working. So there are 3 pillars of sustainability, I think, and they all merge together. Without each other, it doesn't work. So I think that generally, if you see, people are environmentally conscious, but they are little not aware about it. They think that treating waste, or if we'll go for sustainability design in architecture, or we have a wastewater treatment plant or air pollution control treatment plant, it will add to our cost, which is not true. We are, as our company, we are here to make them understand and make this technology affordable for each and every industry, each and every builder. As you know, as per RERA, it is compulsory to have a sewage treatment plant or effluent treatment plant for the industry, zero discharge. But it is not, it is just a shift of awareness, or shift. You have to recall the roots of our Indian traditions. You will discover that we have been, like our elders always have been living in a sustainable, developed culture, True. that when we were kids, it was like first roti you have to give to cow, last to dog, you have to put water for birds. We always showered with bucket. And if even like अपने घर की चद्दर हो, वो भी अगर वो tear हो जाती है, तो then we use it as a duster. So we have been living like that. It is just the time to recall and again start living like that. So as a company, we are doing that. We are making every technology, air pollution control equipment or wastewater treatment, very affordable for our industries and clients. That is what we do. Thank you. Wonderful, Binjan. That's excellent. The 3 pillars that you explained, and I like the way your company is bridging the gap, what we were doing and what we should do in future. So that's really great. Thank you. So yes, Pragya, Yes. would you like to explain what is sustainability in your venture, or how you define it? See, initially, what I'm telling you, what is sustainability? It literally means to me. See, what we have read and what we have studied in architecture, it was that how to do live in present, so that there's no compromising for the person who are living in the future. So, like a mother, whenever she cooks food, and whenever she gives food to someone else, and whenever she takes a food, she always keep in mind that what their babies are going to have and how they will have it. We need to preserve that thing for the future generation. Whatever we are doing in today, it should not impact that. Like we had seen some many videos also,
that if we are going on wasting water or wasting papers and everything, the impact that will be happening in the future generation, that they will be deprived of the fresh water, they will be deprived of this natural environment, they'll be deprived of trees. So whatever we need to use, that is a basic thinking, that whatever we are using today, it should be according to our need, and it should not be wasted, and it should not be surplus also. If we don't require it, we should not make it. That is the basic concept of sustainability that means to me. And in our venture also, what we are seeing today, that because of this mass production of fabrics and everything, there's a more supply than the demand. We don't require that. We have seen that there are so many vendors who are doing this, in especially in many parts of the countries, there this handloom industry has been transferred into power loom, and many factories are now building the same kind of fabrics. Even in Noida, where we live, there are so many fabrics factory, and it is also known as the city for the fashion apparels. So over here, what we have seen, that there's a huge supply of each and everything, despite being covering all over India. We see that there's a lot of wastage also happening in this, and a lot of wastage is happening because they are doing competition. They are doing competition in everything. Whenever we do business, there are 3 P's that I consider should be there in a sustainable business. That is people, planet, and profit. We all are covering only people and profit. We are leaving our planet. If we consider our planet also, we'll think about whatever we are manufacturing and how much it is required, whether it's excess or not. Because of this excess, we are reducing the rates. We are going to this, that we have seen that there's a variety of each and everything, even in Amazon or on local market, variety is there, but the quality is gone in our today's generation of fabric. And when we go for the quality, the rates are already increased, and people even don't know what are the good fabrics and what are the sustainable fabrics. People don't know what is the name of the sustainable fabrics of India. What are the names of sustainable working procedures of India that we have been using. So according to me, if we go for, in my venture, what I feel is that sustainable fabrics leads into many things. Like if we go for a polyester, if we go for rayon, in these fabrics are all are chemically made. These are man-made fabrics, and these are depleting our environment. They're harming our air, because whenever they are making in the factories, hazardous gases are being released. They are using a lot of water for making the fabrics, because they consume a lot of washing is there done over there, and they are even polluting the water bodies also. And they are also increasing the burden on wastage industry, basically. Yes. Like, the recycling and everything. So yeah. So in my venture, what we have done, we have I have been thinking of 6 points of sustainable fashion. One is to go for the sustainable fabrics. In India, there are many sustainable fabrics like silk, like cotton, and other. If you'll go through in depth, each part of India, each state of India has a sustainable fabric of their own. You'll never find only one style of cotton or one style of silk. In every part of India, they have been doing this in the local, whatever they can find it locally. They have been developing that fabric locally. They were not transferring it from here or there, and yet they were having good fabrics at each state. And now what we are having, we are doing this mass supply, and because of this, we are leaving the quality. So the second, what we feel in sustainable fashion is that it should be luxury fashion. Luxury fashion means go for the best, but in a limited condition. Use the good artisans that Indians had, use the best techniques that India had, and go for the best quality of fabrics, but don't go for the surplus of that quality. You cannot copy that handwork with the machine. And if you are doing that machine work, then you are making the surplus. And you're making the surplus, then again there will be wastage. So instead of going with the surplus, go for the luxury kind of thing. Another thing is that we have seen that in initial with our tradition in India,
they were reusing our fabrics. They were even Reusing. yes. Okay. Reusing. You can see that they were very for the weddings. We have seen that heavy wedding lehengas and wedding ethnic wears are being used, but Yeah. none of them are being used again and again in our lifetime. True. So what earlier they used to do, that they used to carry that same wear to the generations, and that was made such with the pure fabrics that it was not even derived of this all the qualities. The colors was never faded because they were made of in a luxury fashion category. So they Right. use the best quality which used to live for years. True. And I also feel that there has to be one official standards for fabrics that I have never seen in this, that they are making categorization of the fabrics, that this is sustainable fabric, that this fabric is harming this. Whenever we see licenses in food, we see licenses in architectural products what we are using, but no such category has been made for the fashions, for the apparels, or for the fabrics that are being used in our industry. So there So should I be a find, standardization on yes, the there method should for be that, some right? standardization. So Okay. normal public can also understand that this fabric is good for our health, this fabric is good for our environment, this fabric is harming our environment, and this fabric is harming something else. So that should be done over there. And we can easily, like Binjan said, that earlier what they can use, they used to recycle, they used to reuse. Like if the bedsheet also gets torn, they used to recycle, or they used to remake it into something else, like a Right. patchwork, like something else, the dusting cloth or something else. So these all things should be done in our industry so that we can achieve a sustainable fabric category, and general public can easily understand how to select the good quality fabrics. So that is my thinking, and I've been trying in my Hunar in India to make people aware of all these things. That you can get this look alike in a cheaper rate, but how it is affecting your body, how is it affecting your environment? That's important to know. If you can spend 200, you can easily spend 500. And you can spend 500 if you will see that if you're spending 500, you will always feel that if we require it and if we really want it, we'll buy it. It's not that just like we have the money so we can spend and we can have that piece and we can keep it back in an almirah, True. and that is kept for years and we are never using it. So it should not be done. That is also the case. Wonderful, wonderful, Pragya. Thank you for Thank you. for educating us on all this aspect of sustainability regarding your business. That's very wonderful. And Thank you. so our last speaker, Mahesh. So आपको क्या लगता है? You heard all of these different industrialists, different people from different professions. So what is you are an environmental engineer. So what is the sustainability according to you, and how you try to put it in your venture? प्राची, देखो कोई वक्ता ने यहाँ बोला है कि we have limited natural resources. पंच तत्व का किसने जिक्र किया? अब नाउ ये सर्कुलर इकोनॉमी में नया जो कंसेप्ट आया है जीडीपी का, प्रोड्यूस मोर एंड मोर, हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब सीधा ये होता है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, which is wrong. What Gandhi was telling is minimum use of natural resources. और and जो आपके sustainability बात है, Gandhi was wonderful in that lifestyle and all. उसने बोला है कि my village is my universe. उसका एक तालमेल की बात की है. आज WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए हमको पैदा करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, we are much more exploitation to our natural resources. तो हमारा ये बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करते हुए, ऐसा कि दुनिया मर जाएगी और ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम ऐसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन हमको ये आदत पड़ गई है कि एक मोबाइल एक साल चलाओ फिर फेंक दो. अब इसमें कितने कंटेंट्स यूज होते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन रीयूज, रिसाइकल, जो बिंजन ने भी बात की और प्रज्ञा ने जो बात की, तो ये कंसेप्ट जो है हमारे पास, वो हम
लिखते हैं क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में सिग्नेचर किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एग्रीमेंट किया है, इसीलिए हम लिखते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हम इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ज्यादा और ज्यादा प्रोडक्शन ऐसी बात करते हैं। हमारा रोल ये रहा है प्राची, मैं तो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं एक ग्रीन कैटालिस्ट हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो शुरुआत हुई देश में और क्वालिटेटिव, वो हमारी संस्था की वजह से हुई। हमने ये बोलना शुरू किया कि भाई मास बैलेंस आप बताओ, कितना पानी का इस्तेमाल करने वाले हो, कितने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने वाले हो, हाउ मच लैंड आर यू गोइंग टू यूज फॉर टू सेट अप इंडस्ट्रीज, व्हाई यू आर एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड, because land is not only for the my industries or for my property, it is a motherland, it is for the food production। तो ये जो बात है, तो इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई अभी इंडिया ने लीड लिया है कि भाई हमारे पास 6 कानून है वेस्ट मैनेजमेंट के, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है? मैंने तो शुरू कर दिया स्वच्छ भारत अभियान का, बट वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन? क्योंकि हमको एक वन हैंड we want $5 trillion American dollar economy, and अदर हैंड हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं और मिनिमम यूज की बात करते हैं। दोनों नहीं चलेगा, पॉलिसी बनानी चाहिए। और ऐसा है कि जो गांधी के प्रिंसिपल थे, मिनिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गांधी ऐसा कतई नहीं बोला था कि हम पीछे रह जाए, अमेरिका आगे निकल जाए। हम इस प्रकार से जाते तो हम भी आगे बढ़ जाते, हमारा ग्रोथ सस्टेनेबल होता। यदि यह सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची मुझे पूछ रही थी कि पापा हम गरीब है इसीलिए हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं या कम करते हैं और आप ये स्कूटर यूज करते हो, व्हाट इज द रीजन? मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आते हैं? वो कोयला से आती है। कोयला कहाँ मिलता है? जहाँ हमारे ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं। हम एक स्विच दबाएंगे, एक यूनिट करेंगे तो हमारा एक ट्राइबल फैमिली को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो तुम्हारे जैसी बच्ची, जो मेरी बच्ची अभी 11 साल की है, ये बच्ची अभी पढ़ने जाती है, उसको चिंता है गरीब लोगों की। बोला कि तुझे ये ठीक लगता है कि तेरी उम्र की लड़की, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए, उसको हम उसको पीने का ग्लास भी देते हैं, अभी उसकी बेड भी तैयार करके देते हैं। अब वो बच्ची को पानी लेने 3 किलोमीटर जाना पड़े, उसकी स्कूल छूट जाए, इस प्रकार का हमको $5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का ग्रोथ चाहिए हमको। तो ये जो बात है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, आई फेवर द इंडस्ट्रीज, ऑलवेज आई नेवर टेलिंग दैट नो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इट शुड बी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज विद इको फ्रेंडली। वेस्ट मैनेजमेंट हम क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं कि हम हर एक में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी हम करते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर इट इज। प्लास्टिक में बोलते, हमने अवार्ड भी पा लिया चैंपियन ऑफ द अर्थ का सिंगल यूज प्लास्टिक में, बट एक्चुअली एक ग्रास रूट पे, धरातल पे होगा सही, क्योंकि हम उसकी पॉलिसी नहीं बनाते अच्छी तरह से। हम ऑडिट नहीं हो रहे को बताने के लिए एग्रीमेंट में सिग्नेचर कैसे नहीं करते हैं। इसीलिए अभी जो इजिप्ट में जो होने वाला है COP27, उसका लाइफस्टाइल पे जुड़ा हुआ वर्ड यूज होने वाला है। मेरा ये बोलना है कि हमारा एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंज होना चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी रहे। एक एग्जांपल देके मेरी बात खत्म करूंगा और दूसरों को चांस दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पुराने सिस्टम में, हम 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पंगत में खाते थे, सब एक साथ में नीचे बैठते थे और खाना पिरसा जाता था और सब एक साथ खाते थे, तब कोई वेस्ट नहीं होता था। आज हमारी बुफे सिस्टम आ गई, 50% वेस्ट करता है। मैं लॉकडाउन की बात करता हूँ, लॉकडाउन में हमारा डोमेस्टिक वेस्ट, अहमदाबाद की बात करता हूँ, 50% कम हो गया। प्राची और बिंजन और प्रज्ञा ने खाना तो छोड़ नहीं दिया था, और भूखे तो नहीं रहे थे, वो भी ब्रेकफास्ट भी करते थे, डिनर भी करते थे, लंच भी करते थे। ज्यादा खा, मैं तो ज्यादा खाता था घर पे था तो, क्योंकि मेरे घर पे अच्छी रसोई बनाती है। फिर भी कम हो गया, क्योंकि ये जो सिस्टम थी हमारी, बुफे सिस्टम, फंक्शन के सिस्टम, और बिगाड़ करते थे, हम वेस्ट करते थे, वो कम हो गई। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति है, और ये संस्कृति की ओर वापस जाना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि $5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का मैं अपोज कर रहा हूँ, मैं तो $10 ट्रिलियन अमेरिकन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ विथ सस्टेनेबल लाइफ। हमारा जो अभी जो एयर पॉल्यूशन में ज्यादातर मौत हुए, आपको वो लार्सेंट का रिपोर्ट ले लो, 2019 में सिर्फ टोटल 2.3 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एंड अकेले एयर पॉल्यूशन में
1.7 मिलियन पीपल डाइड हो गए। अब आप किस ग्रोथ की बात कर रहे हो यार? आप अच्छे जीने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हो। तो ये मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज इज रेडी टू डू। और आप व्यापार जगत जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप ग्रीन की बात कर रहे हो, इको फ्रेंडली की बात कर रहे हो, तो वो भी कर रहे हैं। हमको एटीट्यूड चेंज करना है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें वापस थोड़ा सा वापस जाने की बात करना है। और हमारा जो पर्यावरण मित्र का काम है, ये इंटरनेशनल लेवल टू ग्रासरूट लेवल वही है। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ कि उद्योगपति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक ग्रीन कैटलिस्ट हूँ, एक सामाजिक कार्यकर हूँ। थैंक यू प्राची। आपने बहुत अच्छे से एक बात कही महेश जी कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो जो कंज्यूमरिज्म और जो करंट सिनेरियो है, जिसकी वजह से जो एक इको फ्रेंडली बोलते हैं लोग वो कर नहीं रहे हैं, जो ऑडिट्स नहीं हो रहे, जो स्टैंडर्ड्स नहीं डिफाइन हो रहे। तो वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सबसे कि जैसे इंडियन वैल्यूज की बात हो रही है, तो ऐसे कौन से इंडियन वैल्यूज है जो आप मतलब इनकलकेट करते हो अपने वेंचर में? जैसे प्रज्ञा ने बोला रीयूज है, रिसाइकल है, बट उसके अलावा और क्या है? मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा है कि जो हम लोग भी मतलब आपसे सीखे, एक कॉमन पर्सन आपसे सीखे और अपने डे टू डे लाइफ में डाल सके। ऐसे कौन से इंडियन वैल्यूज आप अपनाते हो बेसिकली? प्राची एक बात मैं बोल दूं बीच में। श्योर। हमारा पूज्य बापू फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं और पूरी दुनिया उसको पूजनीय मानती है। यस। पूज्य बापू ने 3 स्लोगन अच्छे दिए। माई लाइफ इज माई मैसेज, जो मैं करता हूं वही मेरा उपदेश है, नंबर 1। तो उसकी लाइफस्टाइल आप देख लो। दूसरी बात उसने किया कि जितनी वस्तु के यूज करना है उतना ही यूज करो आप। तो जो बोलते हैं कि हमारा जैनिज्म में भी है अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह मत करो। ओके। और अननेसेसरी आप डिपॉजिट मत करो। तो ये जो गांधी ने बोला है, गांधी ने कोई शास्त्रों नहीं पढ़ा, हमारे इंडियन संस्कृति में से ही लिया हुआ वर्ड है। तो गांधी कोई अलग पृथ्वीवासी नहीं है, वो इंडिया का था, भारतीय संस्कृति थी। और भारतीय संस्कृति में जब वाचा दिया है, ये एक अहिंसा की बात की, फिर उसने नॉन पोजेशन की बात की, और जितना चाहिए उतना ही यूज करो। इसीलिए तो वो साबरमती की नदी के किनारे रहते थे, फिर भी एक बकेट डोल का यूज करके वो स्नान करते थे। तो ये जो चीजें है, दैट इज अवर संस्कृति। और यदि ये हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू महेश जी। Yes, Ojas, yes. Sorry, I was disconnected in between. So, Okay. if I talk about Indian values in my field of design, we work on spatial elements, which is more like a design elements like courtyard, planes, and having natural ventilation and all. So we work towards it because there's a lot of tradition associated with it. Water conservation. If you see I'm sure I'm from background of Ahmedabad, but every city, old houses had a really good sustainable way of living. They had a courtyard where it became a light source. There was a ventilation happening from the peripheral wall towards the water escaping from top of the courtyard. They used to collect the rainwater and they used to harvest it. And there used to be a taka, they call it like a water tank below the courtyard, and they used to store it. So throughout the year, they used to use it. And now, these days, we are talking about a lot of alkaline water, this water, that water. I don't want to name the companies, but you have the natural water available. Why can't we do the rainwater harvesting wherever possible, wherever there's a scarcity of water? So these are all age-old traditions which we can put into use and go towards sustainable living. Even in interior, if I talk about, we can go for clothes. I totally agree with Pragya also, because there are a lot of cotton-based clothes which we can do, which doesn't need to be you don't need to dye it. There's a lot of energy which is going into processing that. We can avoid that. And that is how, if we promote, we use a green label products, that will really give a really good product. That is what I learned from the Indian tradition in my field. True. And that is something everyone can adapt in their lives. Exactly. That is easily adaptable. All right. Thank you, Ajay. Yes, Binjan. Yeah, so as a company, what we do is that we understood that why industries are not
going for a pollution treatment. So we came to know that number one, it was a lack of awareness, and the second was, I said that people thought that technology and everything is very, very costly affair. So we tried to do the remedy of both. We tried to talk to industries and make them aware that it is not actually very, very expensive, and with minimum of cost you will be able to save the natural resources, as well as it is not adding to the cost of your company. So thankfully people are getting more and more aware, and we are able to we have supplied more than 200 air pollution control equipments. We have supplied more than 450 wastewater treatment plant, and many of them are reusing the water. So the biggest thing that we have done as a company, it takes a lot of time of ours to make them understand कि bypass नहीं करनी है सिस्टम, पानी रीयूज हो सकता है, अगर आप डाल रहे हो प्लांट तो हम लोग, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो हमने सब कुछ, जैसे इंडस्ट्री को या बिल्डर को, या अभी तो हॉस्पिटल्स में भी इट इज कंपलसरी, मोर देन बेड की हो तो you have to have a wastewater treatment plant. We make sure that not only they put our plant but they operate it. So even अभी the touchwood हमारी सोसाइटी में we have 20,000 KLD का ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेगुलरली वो रीयूज पानी होता है गार्डनिंग के लिए. तो 20,000 लीटर बोर में से कम हम लोग पानी लेते हैं, या पानी कम यूज करते हैं नर्मदा का. सो ऑल दिस लिटल वी आर आफ्टर so many industries and so many, I meet so many people and make them aware about it. Mahesh bhai knows about it, and by the way Mahesh bhai is the leader. He is like in our field, he is the one we look up to for the ideas, and that is what we do. Time jata hai, log जाग रहे. But just imagine, Binjan, what you are doing in your society. अगर वो सबके सोसाइटी में होना स्टार्ट हो गया, तो जैसे इंडिया के कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे पानी मतलब इट्स वेरी रेयर, दे गेट इट वेरी मुश्किल से उनको मिलता है ये सब, इवन पीने का पानी उनको मुश्किल से मिलता है. तो क्या है कि अभी यहाँ पे वाटर मीटर्स नहीं है. सो इफ वो इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज, महेश भाई विल टेल मोर अबाउट इट आई थिंक, तो वहां पे पानी बाय करना पड़ता है, तो पीपल हैव वैल्यू. यहाँ पे क्या में मिलता है तो वैल्यू नहीं है. I agree, Binjan. प्राची, ये जो अहमदाबाद की बात करें तो वी आर टेकिंग द फ्रेश वाटर 1200 ml पर डे, बराबर है. अब पूरा हमारा सीवेज जो 14 सीवेज सिस्टम प्लांट है, एक भी नहीं चल रहा है, और पूरा एकदम अनट्रीटेड वाटर हम साबरमती में डाल रहे हैं. यदि उसका 50% भी हम प्योर करें तो ये कोई स्कैरसिटी ही नहीं है. तो सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग. तो अभी साबरमती का जो सुओ मोटो चला हाईकोर्ट में, तो यही तो बात हुई कि हम एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चला रहे, और ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हमारी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. एग्जैक्टली. तो वाटर स्कैरसिटी हमारी जो वो आर्टिफिशियल है. पानी तो देते हैं गवर्नमेंट. आज देखो कि कितना पानी इस कुदरत ने दिया हमको, और जो बिंजन ने बताया कि उस सोसाइटी में किया है, वो कंपल्सन है. फिर भी हम वायोलेट करते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे बिल्डिंग में नहीं करते हैं. बीयू परमिशन मिल जाता है, वही तभी मिलती है जब हमारा वाटर हार्वेस्टिंग हो, लेकिन 90% सोसाइटीज आर नॉट डूइंग दैट. तो इसके लिए अवेयरनेस और विलिंगनेस चाहिए. रियली आप जैसे प्लेटफॉर्म जो है इसमें बात जाएगी तो काफी. यस्टरडे हमने यूथ डे सेलिब्रेट किया. यूथ में जो बात जाएगी और जो लोक आंदोलन होगा, कानून से कुछ नहीं होगा, ये लोक आंदोलन होगा जागृति के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी और ये पॉल्यूशन की समस्या भी दूर हो सकती है. जैसे कि ग्रेटा थंडर ने किया, अमेरिका ने बैकफुट पे गए थे पेरिस एग्रीमेंट में, उसने जैसे मूवमेंट की तो अमेरिका ने फिर से पेरिस एग्रीमेंट में साइन की. तो दैट इज द ताकत ऑफ द यूथ. और आप जो अच्छा आपका जो व्यापार जगत का
ये मंच थ्रू ये इस प्रकार के जो प्रोग्राम करोगे तो मैं समझता हूँ कि काफी यूथ इसमें मूवमेंट में शामिल होगा और हमारा जो बराबर। प्रयास है वो सक्सेस होगा। और एग्जैक्टली ये जो एजुकेशन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अगर अर्ली एजेस से अगर लोगों को पता चलना चले तो शायद आगे जाके उनको ये अलग से नहीं समझाना पड़ेगा। इट विल बी समवेयर इन देयर वैल्यूज। जैसे अपन लोग इंडियन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जो अपने नाना नानी की या उनके पहले की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। दैट इज अमेजिंग। प्रज्ञा, ये जैसे आपने बताया पहले कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कर रहे हो, तो एग्जैक्टली और कौन से इंडियन वैल्यूज है जो आप अपने एक कॉमन इंसान को बताना चाहोगे कि दैट यू आर डूइंग इन योर वेंचर बट दे आल्सो कैन डू इट समवेयर एट देयर हाउसेस? जी, जो हम लोग अपने वेंचर में करते हैं अभी तक, हमने लोकली हमने ग्रेटर नोएडा में जो अपना बनाया है अपना सर्कल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग नए फैब्रिक्स तो लेके हम लोग नए फैब्रिक्स लेके आते हैं। वी रीसेल ऑल द फैब्रिक्स, इंडियन फैब्रिक्स, बट वी आल्सो कलेक्ट देयर ओल्ड फैब्रिक्स, कि जैसे कि जो भी उनके यानी कि दे आर नॉट ऑन द ऑफ एनी यूज बट दे आर इन गुड कंडीशन एंड इट कैन बी गिवन टू सम यानी कि नीडी पीपल. We collect those stuff, and we have tied up with NGOs who goes to different parts of villages where actual people need their garments. They don't need to buy, and they get good quality of garments from our city, and we donate them. तो इस तरह से we are हम लोग एक तरह से declutter भी कर रहे हैं उनका घर, क्योंकि उनके पास जो excess clothes है, either they will throw them away, या तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे ही पड़े रहेंगे घर में. तो उस तरह से कहते हैं कि ये लोग अपने यानी कि अगर ध्यान देते हैं अपने घर में, तो जो भी इनको ऐसे कपड़े होते जो इनको यूज में नहीं है लेकिन हम किसी और को दे सकते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं. हमने उनकी फोटोज भी अपलोड करते हैं लोगों को जो भी हमें देते हैं अपने प्रोडक्ट्स और कपड़े. वी ऑल्सो गिव देम सर्टिफिकेट्स विद टाई अप विद NGO, क्योंकि वो एक नेक काम कर रहे हैं. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पे उन लोग के पास सोचिए एक जोड़ी कपड़ा रहता है जो वो हफ्तों तक वही पहन रहे होते हैं. अगर हम अपने घर से 3-4 जोड़ी कपड़े ऐसे निकालते जो कि यूज में नहीं है और उनको दे दें, तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो जब भी हमें देखी हमें बहुत अच्छा लगा. वो फीलिंग ऐसी है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती, वो खुद फील करनी पड़ती है. तो एक ये हम लोग का एक इंडियन वैल्यूज में हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसको रीयूज करें. जो जैसा है वो उसी को किसी ना किसी को देके उसको यूज में लेके आ रहे हैं. कुछ कुछ फैब्रिक्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि इंडियन फैब्रिक्स हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, लेकिन जरी वर्क और बहुत हैवी वर्क वाले होते हैं. तो वी हैड टाइप विद यानी कि अपनी लेडीज से सोशल अपने सर्कल में हु कैन डू सम स्टिचिंग जॉब और समथिंग. They are so brilliant in their jobs, and they're still the housewives, and they're so brilliant that they can transform that simple sari or simple dupatta into some dress for a kid, or they can into transform into so many bags. And we had gone to Peru also for this Indian trade fair, and over there we had taken these stuff which were locally made in our society, and we had distributed, and we have seen over there that so many foreigners over there, they were so delighted with the stuff. उनको इतना पसंद आया कि वो कह रहे कि these are hardly, यानी कि उनको कॉस्ट क्या पड़ी. We had taken them from someone who जिनके लिए एकदम वेस्ट हो चुका था वो. They had given us for free. We had given them to that lady. उनके पास हमने थोड़ा सामान दिया, अपना थ्रेड वर्क और सब कुछ. She donated some time, and उसके बाद उसने जो उस बैग को बनाया, इतना ब्यूटीफुल बैग बनाया, जो हम अगर कहीं लेके जाएंगे किसी मॉल में कहीं रखेंगे तो वो कम से कम 1000 रुपीज में जाएगा. और इट वाज सो ब्यूटीफुल. और उसका यानी कि दिस इज द वे ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग समथिंग. एंड अभी तक हम लोग जो फैब्रिक्स देते आए हैं लोगों को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग एकदम अच्छी क्वालिटी का स्टफ उठाएं, कि प्योर कॉटन में है या प्योर किसी चीज में है. तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को फैब्रिक की नॉलेज मिलती है. अभी तक जैसे मैंने देखा कि इन लोग को नॉलेज नहीं थी कि सिल्क और कॉटन में क्या क्या आता है. यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास ये नॉलेज नहीं थी कि अगर हम सिंथेटिक रेयॉन भी लेके आते हैं, दे फील दैट दिस इज ऑल्सो कॉटन, एंड ये सॉफ्ट कॉटन है, सिल्की कॉटन है, सब इस तरह से नाम चल रहा है. क्योंकि आजकल यहाँ पे जो इंडिया में हम लोग ने नोटिस करा है कि फैब्रिक का नाम इतने ज्यादा वैरायटी उसमें बना दी गई है कि किसी को नहीं पता कि रियल फैब्रिक क्या है. तो हम लोग को यही है कि इंडिया में जो नेचुरल फैब्रिक था उसका हम लोग यहाँ पे उनको कुछ थोड़ा सा पार्ट दिखाते हैं कि ये ऐसे फील होनी चाहिए.
and we make them feel the fabric. We make them try the fabric, and then we ask them to buy. If you don't feel कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है, you can leave it, but you have to feel and try. आपको यानी कि आजकल जैसे कि हमने देखा ऑनलाइन वेंचर्स बहुत सारे शुरू हो चुके हैं, जिससे कि आप फैब्रिक्स कहीं से भी मंगा सकते हैं. फोटो सबकी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप जब उसको मंगाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या चीज आ गई. हाँ, बराबर है. तो और किसी को पता नहीं है कि वो क्या फैब्रिक है, अभी भी नहीं पता होगा किसी को कि ये फैब्रिक कौन सा हमारे हाथ में आ गया. तो वो सब चीजें रहती हैं. और फिर उसके बाद हम लोग इंडियन ब्यूटिफिकेशन का जो मेथड होता है ना फैब्रिक का, वो हम लोग प्रेफर करते हैं. जैसे कि अगर नॉर्मल कॉटन भी है, तो कॉटन में प्रिंटिंग की जगह जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, उसकी जगह हम लोग प्रेफर करते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, कि जो हाथ से थापे लगा के जयपुर में जो फेमस है वो चीज प्रमोट करते हैं. जो हाथ की चिकन की कढ़ाई होती है, जो हाथ की कढ़ाई होती है, सब चीजें, वो सब चीजें हम लोग प्रमोट करते हैं. आप मानेंगे नहीं, मेरे शहर में बहुत लोगों को पता ही नहीं कि चिकनकारी होती क्या है. उनको लगता था जो मशीन से धागे में कढ़ाई कर दी जाती है वो चिकनकारी है. और चिकनकारी मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता भी नहीं है. And it was one question in the KBC also. I've seen some time before that over there also it was raised a question, and that lady couldn't answer that this is चिकनकारी, कि वो कौन सी वर्क है. कि हमारे इंडियन एम्ब्रॉयडरीज कितने सारे वर्क होते हैं, इतने सुंदर सुंदर हाथ के काम है, लेकिन लोगों को नहीं पता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि आजकल वो सारे जो यूज में नहीं हो रहे हैं, तो इनके जितने आर्टिशियंस हैं इनको जॉब नहीं मिलती. इनकी सारी हम लोग इनको सब खो देंगे, फिर लास्ट में जाके हमें अब यही हाल हो गया है कि चिकनकारी का एक स्पेशल आर्ट होती है तेपची वर्क, जो कि बहुत ही सिंगल धागे से बहुत महीन ऐसे बनाया होता है. उसके हमें आर्टिशियंस नहीं मिलते. अब अगर हम उसका काम चाहते हैं अपने पास, वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर द सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ, क्योंकि वहां पे उसके आर्टिशियंस ही नहीं बचे, काम करने के लिए लोग ही नहीं बचे, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड टू समथिंग एल्स. अब जनरेशन से जनरेशन हम लोग मूव टू फास्ट फैशन बेसिकली. यस. अब वही चीज है कि हम लोग अपना इंडियन वैल्यूज को अगर हम देखेंगे कि हमारे पास फैब्रिक्स के केवल कपड़ा ही इम्पोर्टेंट नहीं, कपड़े के ऊपर जो काम किया है गया है वो कितना इम्पोर्टेंट है. तो अगर उस तरह से हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो अब लोगों को समझ में आता है कि सीरियसली कि मॉल में जाके शॉपिंग करने से अच्छा है कि हम अपने इंडियन चीजों को देखें. मॉल में जाके भी हम लोग अपनी शॉप कर सकते हैं. वहाँ पे हमारा टारगेट यही है कि वी हैव टू कम आउट. एंड हमारा टारगेट क्या है, जैसे कि हमने लेडीज को सोसाइटीज में हमने डील करना शुरू करा है. वी वांट आउट एंड वी वांट टू गो आउट. और वहाँ पे जब हम लोग बाकी और लोगों से मिल, जब लोग वहाँ आते हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है, या तो पेंटिंग की आर्ट होगी या तो एम्ब्रॉयडरी की आर्ट होगी. देन वी वांट देम टू टीच अस एंड टीच अदर्स. और उसको जब वो सिखाएंगे और जब खुद करेंगे, उनके अंदर भी एक शौक जगेगा और बाकी लोग भी और सीखेंगे और इसके बारे में सब लोग को पता चलेगा. तो दिस इज अ मेन मोटो कि हम लोग किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं. राइट. एजुकेशन के साथ साथ एक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो और अपने काम से वो दिखा रही है सबको. दिस इज वंडरफुल. थैंक यू प्रज्ञा. मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, बट ये सब अपन बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वैल्यूज, इंडियन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, बट ये सब करते हुए देयर मस्ट बी बहुत सारे चैलेंजेस हो गए आपके लिए. तो वो चैलेंजेस क्या है आपकी? हर एक की इंडस्ट्री अलग अलग है, और वो चैलेंजेस क्या है वो हम जानना चाहते हैं. और वो आप कैसे वो चैलेंजेस को पार करते हो? और ये मतलब ये टीम एफर्ट है, आपको अकेले करना पड़ता है, कैसे? मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे? देखिए, मेरी इंडस्ट्री में जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं अभी तक, वी आर डीलिंग विद द मास प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स. जो आपका यानी कि जो भी फैब्रिक्स आपके जो बन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे भी अगर हम देखें कि अगर हम एक नॉर्मल कुर्ता ही लेके चलते हैं, नॉर्मल कुर्ता भी अगर देखेंगे तो वो जो कुर्ता होगा, हम अगर लेके आएंगे प्योर कॉटन का या प्योर सिल्क का विद सम एम्ब्रॉयडरी या सम हैंड वर्क, इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू अबव 1000. ठीक है. और उसका सिंपल अगर केवल हैंड ब्लॉक का भी लेंगे तो 500 से हमारी स्टार्टिंग हो पाती है. एंड ओवर हियर वी हैव अ मार्केट which starts for 150 or 200. Even you don't believe, I have gone to Pantaloons, I have gone to so many big brands, they are selling kurtas, simple kurtas for 200. And when I touched the fabric, because I was shocked with how come they are selling the same kind of fabric in this rate. But when I touched the fabric, it was rayon. And rayon has captured so much of India and in this fashion industry, and people don't know how much that is affecting our environment.
तो I बेसिकली have read about कस्टमर this. अवेयरनेस नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा Yeah. चैलेंज हो जाएगा यहाँ पे। एंड Right. रियॉन में अभी तक जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना मैंने जाना है कि इट्स सो हैजार्डियस कि उस टाइम पे जब आपका मैन्युफैक्चरिंग भी होती है तो जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, many workers had died because of the smell that fabric is emitting. उसको कहते हैं कि आप लोग का ये नेचुरल उससे आपका प्लांट से निकाला गया है, एंड दे आर कटिंग so many trees for it, but they are taking some part of the plants, but they are using chemicals and other things which is making so hazardous that जो वहाँ पे वर्किंग, देखिए वो जिस लेवल से स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग के स्टार्ट फर्स्ट लेवल से ही इट इज इम्पैक्टिंग आवर एनवायरमेंट। सबसे Right. पहले इट्स कटिंग आवर ट्रीज, then it's going to the factories. Over factories they are using some harmful chemicals that is affecting the workers over there. That chemicals are going out in the air, that chemicals are going into the water, that is affecting our air and water. Then that finished product that is coming to us, that product is also harming our body. You get True. so many skin diseases because of this, because that is not a breathable fabric. Right. We talk about breathable fabric. जितने भी इंडियन फैब्रिक्स हैं, जितने भी हमारे पुराने इंडियन प्योर फैब्रिक्स है, दोज आर ब्रीदेबल फैब्रिक्स। यूज करेंगे, खराब भी हो जाएंगे, फिर भी आप उनको वापस करके आएंगे ना, यू विल गेट सम मनी। वी हैव हर्ड अबाउट दिस पश्मीना आल्सो एंड प्योर सिल्क साड़ी और बनारसी। अगर आपकी साड़ी फट जाए, कुछ भी हो जाए, यू कैन गो एंड रिटर्न इट एंड यू विल गेट सम मनी बैक। चाहे जितनी भी कॉस्टली हो, आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलेगा उसका। तो वही चीज है कि बट ये चीज हम हर लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस मास प्रोडक्शन। और वो उसमें हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने चेंजेस देखे हैं कि जिन्होंने यूज करा है उनको अंतर समझ में आया है, बट इट्स अ बिग चैलेंज। थैंक यू प्रज्ञा। बट जो सेकंड पॉइंट आपने बोला कि पोल्यूशन का, जहाँ पे बिंजन इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द फ्रंट रो उस एरिया में, तो आई वुड लाइक टू नो बिंजन की आपके लिए क्या चैलेंजेस है और आप कैसे ओवरकम करते हो ये चैलेंजेस के लिए? Challenge is that pollution treatment is not the priority for most of the people. It's not the priority because of, as I told, that misconception, lack of awareness, lack of intention, and all that. So we are working on it. I would rather, I don't want to talk about why they are not doing what has to be done. So we just work. We think that we are working on spreading the awareness and making the plants like what we manufacture very, very cost effective, so they don't feel that, so environment become their priority unless too late and then they have to do it. But if we go slowly and steadily and make them aware, make technology which are affordable, then they will do it. So that is what I think. But how do you motivate them, Binjan? Like, it's not something that someone will do out of. Sometimes it is very, very tough. Can understand. So we try, अपने भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म कर फल की आशा मत रख. So that is what we do, right? Nice. Yeah. Thank you, Binjan. Yes, I will have to interrupt all of you in the middle. Yeah. So I think we are done with 60 minutes of the session, and we have another panel session lined up. So it was a great session by all of you. Thank you, Prachi, and thank you all the panelists. Thank you so much, Ojas ji, Mahesh ji, Binjan ji, and Pragya ji. Thank you. Yes, Dr. Praveen, you have something to say? I think Ojas bhai wants to say something. Ojas bhai, please go ahead. So the challenges they were asking, so I just want to share, it's very common to the panel people also. We work on a lot of hospital projects. So there is a clause that you have to use STP or ETP. Sometimes most of the builders, what they do, bypass कर दो ना, इसको देखना, BU तक कर दो, बाद में मत करना. We should not take those kind of shortcuts. दूसरा आर्टिस्ट होते हैं जो सच में नीड में होते हैं, बट मिडल मैन होते हैं जो ज्यादा पैसा कमीशन लेते हैं और आर्टिस्ट तक नहीं मिल पाते. Mostly award winning artists होते हैं. So these are the challenges which we should all try and overcome with the help of each other. That's all. Thank you so much, Praveen ji. Definitely. Thank you so much, everyone, and I especially thank Mahesh bhai for joining this particular panel. And Mahesh bhai, you have shared such stories. I think it can impact to a lot of people, and I think that is something that every Indian should
अंडरस्टैंड एंड एक हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिस अर्थ पे हम जीते हैं, राइट, वहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती है आज की डेट पे, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू कम टुगेदर एंड ऐसे सेशंस हमें करने पड़ते हैं. सो विद दिस सेशन आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल गेट दैट अवेयरनेस एंड पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दी सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्या है, एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग की जो हमारी ट्रेडिशंस थी, जो पुराना इंडिया था, है ना, उसको उसमें मतलब दैट वाज there were so many techniques and there were so many things and people will start understanding. So thank you so much everyone for joining and sharing your inputs. So thank you so much once again everyone for joining this particular panel.